and permanent member of COP since Paris Agreement. 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ, उसका 2016 में जब हमारा इंडिया पेविलियन बना मोरक्को में, मरकेश में, तो लास्ट डे प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी, उन्होंने जो कुछ बोला वो बड़ा लैंडमार्क था. उस पर भी मैं जिक्र करूंगा, उसको भी मैं कवर करूंगा. आई विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो. Well, we all know mitigation of climate change through R&D efforts in renewable and conventional power technology is the main objective of the Green Power Mission of India. इंडिया के जो 10 मिशन हैं, अभी तक 9 मिशन थे, 10th मिशन क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का आ गया है. ये नीति आयोग के साथ जो 10 मिशन हैं, इनमें से एक बहुत बड़ा मिशन है, दैट इज ग्रीन पावर मिशन ऑफ इंडिया. अगर आप कभी नीति आयोग जाएं तो आप पाएंगे 10 थिंक टैंक हैं. दिल्ली में आप कभी नीति आयोग में जाइए, वहां 10 थिंक टैंक हैं. 10th थिंक टैंक ऑफ कोर्स डेवलपमेंट में है, जिसमें क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स हैं, इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल्स हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स. उसकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा रहा है. और कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन भी उसी में आ रहा है. बट एक तरफ डंपिंग चिमनीज आर देयर, CO2 डंपिंग, और दूसरी तरफ वी हैव गॉट अदर साइड वी हैव गॉट सोलर, विंड एंड बायोमास. Global impact of climate change, I will not cover much. You all know about it actually. It's a very common knowledge. Projected climate change over India, you also know that. You know the today's scenario, we have got 405 gigawatt today, all India capacity. Coal is 50.3%, hydro 11.3%, and renewable has gone very high to 28.6%. 114 gigawatt. 114 gigawatt is a big figure. If you look at thermal, coal is this much. Okay, well, okay, that will be fine. And renewable energy is about 114 gigawatt, 28.3%. If you see the breakup, the solar is 57 gigawatt, 58 gigawatt today. Yes. It's a very good figure. Target was 100, but so far we have achieved so much. But at the same time, this is mostly solar thermal. This is mostly solar PV. How about solar thermal? Very poor, very poor. So I will talk, and that's the area where we have to go. This is a wedge strategy. जिस तरह भगवान ने हमें 5 उंगलियां दी हैं, there are only 5 methods. There are only 5 methods to combat climate change through renewable energy. One is today's total emission of world is 11 gigawatt. 11 gigawatt carbon means 11 multiplied by 44 by 12. 12 kg of carbon produces 44 kg of CO2. C plus O2 is equal to CO2. 12 plus 32 is equal to 44. So 11 into 44 by 12, that comes to 40,000 million tons per annum. That is the total emission of the whole world. पूरी दुनिया में इतना इमिशन हो रहा है, जिसमें भारत में कितना है? 4000 के लेवल, 4000 के लेवल पर. वी आर एट द लेवल ऑफ 4000, एंड पावर सेक्टर अलोन इज अबाउट 2000 million tons per annum from the power sector. Our big mega projects, Singrauli, Vindhyachal, Rehand, Anpara, and Korba, Farakka, all those dumping into the atmosphere. So that's a very, 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 very big challenge. Per capita is very low, but there are only 5 methods. One is energy efficiency, energy conservation. You all read that. You all know about it. Actually, all students know. Fossil fuel, clean coal technologies. This is a new mission of India. Clean coal technologies, actually. It includes supercritical boilers, where the coal consumption is less and CO2 emission is also less by about 14%. Nuclear and hydro, no emission. 4th is renewable energy and biosources. And fifth is the new dimension, that is carbon capture and sequestration. So in 2015, when we presented our white paper, we presented in 2015 at COP21, that is Paris Agreement. That time we said that we will try to restrict from 2015 to 2065
In the 50 years, we'll try to restrict to 1 gigaton per year, not more than 1 gigaton per year. That is the limitation. That's the slope of this curve. That was the India's commitment at COP21, COP21, Paris Agreement. We said coal contributes about 58% of the entire commercial energy demand in India. Installed capacity और demand में फर्क होता है. आपके सोलार पावर प्लांट कितने भी ज्यादा लगा दें, लेकिन प्लांट लोड फैक्टर उतना हाई नहीं होता उसका. इसलिए this is 58%. About 70,000 million tons per annum CO2 is emitted by coal-fired power plant. Today it is 2,000. Today's figure is 2,000. March 2023. And 40 gigaton, of course, the world emission, which I have already told. India has pledged to reduce its carbon intensity by 33% COP21. That is, this means, what is the emission from power plant, coal-fired power plant? 0.9 kg per kilowatt hour. 0.9 kg per kilowatt hour, that is the 0.9 kg per kilowatt hour is the CO2 emission of 0.9 ton per megawatt hour. Same thing. And it has to be brought down to a level of 0.6 by 2030. This was a very, very big commitment at COP. This is achievable through induction of carbon capture. It's not possible by solar, wind or anything actually. Solar से कोई carbon capture तो नहीं होता. Solar से क्या होता है? Carbon avoided है. This is avoiding carbon, not capturing carbon actually. Out of the total renewable energy target 175 gigawatt by 2022, we have already achieved 140, of course. So at the time of COP21, that is Paris Agreement, we committed that is a figure of 175. In COP26, recently, India is pledged to meet 50% of energy need from by that is 500 gigawatts from the renewable energy. Very big target, very, very big target. लेकिन क्या आप सोचते हैं कि 2030 तक टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होगी? It will be 1000 गीगावाट. आज 403 गीगावाट है ना, तो 2030 तक हमारी कितनी हो जाएगी? 1000 गीगावाट. तो हम कौन सी इकोनॉमी कहलाएंगे? ट्रिलियन पावर इकोनॉमी. 1000 giga is trillion, isn't it? तो इसके लिए 500, लेकिन ऐसे ये 50% के लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए. We should not say कि हम सारा सोलर लगा देंगे. नहीं. जर्मन did it this mistake. जर्मनी ने ये मिस्टेक किया. What happened? Their turbines were doing the two shifting. Every turbine in Germany was every steam turbine, coal-fired power plant or lignite power plant. They were starting in the morning and closing in the night. उसको two shifting करना पड़ता था, and they buggered up all the turbines. So they have now gone back. They tries to reduce renewable energy. So renewable energy की भी एक लिमिट होती है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. एक टाइम क्लॉक है. At COP22, we got a software known as climate clock. This climate clock software I tried to run on 11th of October 2022. What is the importance of 11th of October 2022? क्या हुआ था उससे? महाकाल में बना था ना कॉरिडोर. तो इसमें जो फिगर फीड करना पड़ता है, वो कौन सा करना पड़ता है? Not the Greenwich Mean Time, but जो हमारी रेखा इससे जा रही है, जो हमारी लॉन्गिट्यूड जा रही है फ्रॉम उज्जैन, उसकी वैल्यू फीड करनी पड़ती है, तब नासा के बराबर आपको फिगर एग्जैक्ट मिलते हैं. क्या फिगर मिलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आज का ये उस दिन का टेम्परेचर है. ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ गया था. 24 years time lapse for 2 degrees is 24 years. Tons of CO2 emission is 22,000 gigatons, and carbon budget left is 1,800 gigatons per CO2. This is the only carbon budget available. This is the actual carbon budget available actually. और इसमें जीरो कहाँ लेते हैं? जीरो लेते हैं कर्क रेखा जो कि उज्जैन से जा रही है, और लॉन्गिट्यूड कहां से? उज्जैन वाला. नॉट
ग्रीन रिचमेंट टाइम वाला, तब जाके फिगर ये सही वही मिलते हैं जो कि नासा के फिगर हैं। अब इसका कारण क्या है ये तो मैं नहीं जानता। I put some of the students to do it actually. इसको वर्कआउट करिए कि the software I can always share with the people. This is a license software, but I can always share when they come to me. दूसरा ये है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री करें तो हमारा कार्बन बजट कितना बचा? 800. That is the only carbon budget left now. अब इसी में प्ले करना है जो भी करना है। ये तो स्लाइड है जो COP22 में इंडिया पेविलियन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग शुरू में GSGT में थे लुजान में। तो लुजान के बाद में when we came to the last day and India pavilion was made at Marrakesh, Morocco. That is the slide. मैंने इसकी फोटो खींच ली थी उस समय। तो ये स्लाइड में उन्होंने कहा था कि India is a fast-growing economy pursuing strategic knowledge mission and focus area in climate change. Yes, we all must agree to this. We are a fast-growing economy. We had declared to reduce greenhouse gas intensity by 30 and planning to install 175 gigawatt power in 2022. That is what we did it. And we are contemplating to sequester 2.5 to 3 billion tons of CO2 to additional forest and tree cover. एडिशनल फॉरेस्ट ट्री कवर कहाँ से आएंगे? एडिशनल फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री से आएंगे। जो लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो जानते हैं इस चीज को कि फॉरेस्ट को बढ़ाना आसान नहीं है, बट एग्रो फॉरेस्ट्री इज द वन वेयर वी कैन डू। R&D in solar thermal is targeted 24/7 thermal storage. सोलार को आप पीवी तक लिमिटेड मत रखिए, सोलार को पीवी तक लिमिटेड मत रखिए। सोलार थर्मल इज ए बिग पोटेंशियल फॉर इंडिया। मैं आपका आऊंगा उसके ऊपर। Our R&D in carbon capture sequestration will initially focus on post-combustion carbon capture. Carbon capture में काम करिए। इतने थर्मल पावर प्लांट है, उससे CO2 इमिशन हो रहा है 0.9 टन पर आवर पर मेगावाट। 500 मेगावाट के प्लांट से 400 टन पर आवर हो रहा है। 500 मेगावाट के 450, 450। This emission will come to that. We have to do something for that. And our focus is on climate change, adaptation in energy generation, use, agriculture, forest, water and livelihood. So we committed that हम लोग mitigation की तरफ ही नहीं जाएंगे, we will also go for adaptation. Adaptation and mitigation both are very, very important for that. Then COP22 में यहीं पर उन्होंने कहा कि carbon space for every country, and the countries between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn should form a consortium that's called International Solar Alliance. But this is a reality. There is the International Solar Alliance in Delhi, in Gurgaon. This is the International Solar Alliance. इसके members अब 124 हो गए हैं. Members 124 members are there. It was founded and its headquarters is Delhi NCR, that is Golpadi, Gurgaon. And Prime Minister Modi and the French President Emmanuel Macron was jointly awarded the honor for the pioneering work in International Solar Alliance. So International Solar Alliance has to do a lot of work. अब International Solar Alliance का जो focus हो गया है, the focus today of International Solar Alliance is towards solar thermal with thermal storage, not solar thermal alone, because solar thermal alone does not mean anything. 5 hours तक ही इतना फ्लक्स मिल पाता है आपको 600 वाट पर मीटर स्क्वायर, उससे ऊपर 5 घंटे के लिए। बाकी टाइम क्या होगा? तो थर्मल स्टोरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 40 gigaton 2 डिग्री के लिए एंड ऑल दैट। दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। लेट मी सी नाउ व्हाट हैपेंड लास्ट COP26 जो ग्लासगो में 2021 में हुई, इसके बाद मैं रिटायर हो गया, तो कभी मुझे जाने का मौका नहीं मिला। 2027 आई कुड नॉट गो टू COP22, but 26 में जो बात हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। They were very important thing. एक नया बजवर्ड आया, नेट जीरो सिनेरियो। ये कैसे आएगा? In the absence of carbon capture sequestration, India's fossil fuel share in primary energy mix will lead to decline to 5 to 6% in net zero scenario. जब हम देश में नेट जीरो सिनेरियो में आ जाएंगे तो 5 से 6% ही हमारा गोल का रह जाएगा अगर CCS नहीं हुआ। लेकिन CCS हुआ तो 15 से 19 से 30। लेकिन रियलिटी क्या है?
रियलिटी ये है कि हमारे पास 50 साल के लिए कोला है, हमारी इकोनॉमी कोल बेस्ड है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम 30% को तो मान सकते हैं कि 30% हमारा होना चाहिए कोल बेस्ड प्लांट, बट उसके लिए क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, the flue gases on the boilers must be captured to monoethanolamine or maybe the dry solvents or whatever, maybe number of technologies are there. Now I come to this part of my lecture, innovative approaches in the renewable energy sector. You all know solar में आप लोगों ने ज्यादातर नाम सुना होगा पीवी थर्मल का, and the third one is innovation technology that is known as what is thermoelectric. What is thermoelectric? PV सभी जानते हैं, photovoltaic plates. Thermal we all know, reflectors, Schaeffler discs, focusing into a point source, okay, or maybe line source. So you all know, wind you know, hydropower you know, biomass. Let me very quickly cover all this actually very quickly. If you look at the biomass, it has got a disadvantage, inefficiency, harmful solar particles, tar formation and all that. Nuclear side, why nuclear is only 4,800 megawatts for last 4 years? Everybody answer. पिछले 10 सालों से हम एक ही लेवल पे क्यों हैं, 4,800 के लेवल पे हैं, रॉ मटेरियल। अमेरिका से हमारा एग्रीमेंट तो हुआ था, उसका क्या हुआ, रिन्यूएबल। There were so many conditions in that agreement with US that कि उसको हम नहीं ले पाए, लेकिन ऑप्शन क्या है आज की तारीख में, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, TS232 plus N01 is equal to यूरेनियम 233, मिसाइल ऐसे तो बन जाता है। मैं तो न्यूक्लियर प्लांट बहुत साल चलाया है, तारापुर वाज आवर फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट। जब हम लोग रुड़की से इंजीनियरिंग करके आए तो सबसे पहले वहीं पोस्टिंग हुई हमारी, दैट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग। तो तारापुर के अंदर अब तो डिग्रेड कर दिया गया है, 236 मेगावाट का था, 140 मेगावाट पे। बट क्वेश्चन इज हमारे लिए ऑप्शन क्या है, हम लोग क्यों न्यूक्लियर में, क्या न्यूक्लियर में काम नहीं हुआ? Lot of work has been done in nuclear. BARC has done wonderful work, but where that work mostly in the isotope application of isotope, radioisotope application. That is one. Second is peaceful application of nuclear energy. Lot of peaceful applications of nuclear energy are there, that they are focusing on that. लेकिन अगर पावर्स में आगे बढ़ना है हमको और 4,000 या 5,000 मेगावाट का बैरियर ब्रेक करना है, इफ यू वांट टू ब्रेक ए बैरियर ऑफ 5,000 मेगावाट, बिकॉज 4,860 अगर आप फिगर देखें तो पिछले 10 साल से यही फिगर चला रहा है। तो इसका ब्रेक करने का एक ही तरीका है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, फास्ट बीटर रिएक्टर्स TS232 plus N01, हाई स्पीड हाई एनर्जी न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करना होगा, एंड दैट इज टू कन्वर्ट इनटू यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 को भी एनरिच करना पड़ता है, इसलिए हमारे पास जो प्लांट है, प्लूटोनियम प्लांट है, उसको भी एक्सटेंड किया जाए। The plutonium plant, if you have a visit to BARC, you will find the plutonium plant is being extended to enrich uranium 233. हमारा जो एक्सपीरियंस है यूरेनियम 235 के साथ है और 238 के साथ है, लेकिन 233 के साथ हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। जियोथर्मल इज देयर, ऑफ कोर्स जियोथर्मल बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, हमारे देश में कितना बन पाएगा, मुश्किल से मेरे ख्याल से 40-50 मेगावाट ही बन पाएगा, क्योंकि मणिकरण एंड सम एरियाज आर देयर वेयर जियोथर्मल एनर्जी इज अवेलेबल, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऑफ कोर्स अप टू सेकंड 5 ईयर प्लान तक हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक में काफी काम किया, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान तक, बट आफ्टर दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिक हैज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ इश्यूज, rehabilitation and all those issues have come. Tidal also potential is there,
Fuel cell is nothing but a battery in which the reactants are continuously supplied to the electrodes and the product is continuously taken out. So fuel cell में काम करिए, ये R&D का बहुत बड़ा एरिया है. Why you should work on fuel cell? Because electric vehicles cannot sustain more than 80% of the total demand until unless you have fuel cell. बैटरी से 80% आप कवर कर सकते हैं, बाकी 20% आपको फ्यूल सेल से करना पड़ेगा. Wind, lot of new lectures will be there. CSP, concentrated solar plant or solar thermal as we call it. CSP. Whole world has got 6 gigawatt. 6 gigawatt. 6,000 megawatt of दुनिया में. It's not low figure. What a low figure it is. And India is at the level of 500 megawatt. 0.5 gigawatt India hai. CSP technologies, some countries are doing good in CSP technology. Australia is doing good. Melbourne में अच्छा plant है. Then in the Alabama area in the US also. Well, if you look at the total spectrum of the solar technologies, how do you look at this? Solar radiation, PV, electric power. Okay, direct. Solar thermal, energy storage and power. Or thermoelectric. What is thermoelectric? Thermoelectric is nothing but a reverse of what is called temperature. किससे नापते हैं आप? Thermocouple से. A reverse of thermocouple. Seebeck effect. Peltier effect नहीं. Seebeck effect. So this, if you it is a plate. If you have a temperature of 0 degree here and 200 degree here, you can produce 1 kilowatt. Thermoelectric भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं. और आप लोगों को जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि इंडिया में थर्मोइलेक्ट्रिक सिर्फ भोपाल में होते हैं. इंडिया में थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस इज मेड ओनली इन भोपाल. दैट इज इन बीएचईएल के पास में फैक्ट्री है इसकी. दिस इज द ओनली प्लेस वेयर अदरवाइज थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस आपको चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है जो 20 दिन में खराब हो जाती हैं. थर्मोइलेक्ट्रिक से क्या करते हैं? थर्मोइलेक्ट्रिक प्लेट. थर्मोइलेक्ट्रिक का जो एप्लीकेशन है भी हमने सोचा था कि कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई. इट स्टार्टेड विद इंडियन नेवी. इंडियन नेवी में क्या है कि हमारी शिप्स के अंदर जो बॉयलर है तो उसमें टेम्परेचर है और आउटसाइड पानी का टेम्परेचर कितना है. हाउ मच टाइम आई गॉट? तो मेरे लेक्चर तो 3 घंटे चलते हैं. कितना टाइम था मेरे पास? हाउ मच टाइम यार? कैन आई 11:30 तक कर सकते हैं? हाँ, 5 to 10 minutes. Okay, 10 minutes. Okay, I will quickly. So thermoelectric is a device where it works with the temperature difference. If you get temperature difference anywhere, that is, for example, exhaust of a Bukhari. You know what is Bukhari? Bukhari जानते हैं आप कश्मीर में शायद जानते होंगे. बुखारी वो है कि हमारे आर्मी जवान जो शेल्टर हुए आर्मी जवान के, उनको कमरे को गर्म करने के लिए बुखारी. और बुखारी का एग्जॉस्ट कहाँ जाता है? बाहर जाता है. बाहर का तापमान क्या है? What is the temperature outside? -20, -10, सियाचिन, लेह, लद्दाख. तो इसकी जो एग्जॉस्ट पाइपलाइन है उसके ऊपर आप थर्मोइलेक्ट्रिक डिवाइस लगा दें तो लाइटली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो ये काम DRDO has taken up this particular work. As far as concentrated solar power is concerned, concentrated solar power, yes, we are only at a level of 500 megawatt. और ये खाली running plants are there. These are the only running plants in the country. These are plants in pipeline and running plants here. CSP pathway में अगर देखें तो पहला जो प्लांट CSP का यहाँ पर जो टेस्ट प्लांट है वो RGBP में लगा है. 30 किलोवाट का. This is 30 किलोवाट प्लांट है RGBP भोपाल. 2014 में हम लोगों ने लगाया था इसको. This is reflector है. This is Japanese plant actually, 30 kilowatt. You can have a look. Another plant which is there is a 1 megawatt plant at Mount Kapu. It's a very big plant, and it's a thermal storage जो है shell में होता है. This is ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंदर है. This is the 1 megawatt plant. This thermal storage is a 60 meter square thermal storage is there, and
And this is how the power is generated. Actually, reflector is there, shuffler, big shuffler units are there. They are focusing into a shell, cast iron shell, German technology. पहला जो technology थी, Japanese technology थी, German technology है. Yes, and this is how power is produced and power is transmitted. And this is 16-hour storage है इसके अंदर. तीसरा प्लांट ये RKDF में लगा था, RPI USA ने लगाया था. And we have this big plant at RKDF University with solar thermal and thermal storage and turbine running on that. And biggest thing is thermal storage actually. I skip all that actually. This is then looks at the carbon capture and sequestration. Carbon capture that year 2008. This is 2014 के बाद ये बंद हो गया. But we made another plant actually jointly, myself,